Hello students, this is Radheshyam Yadav. Today I will solve one numerical examples of electricity, that is an electric geyser rated 1500 watt 250 volt is connected to a 250 volt line. Means solve. Then we have to solve for number 1a, the electric current drawn by it. B, energy consumed by it in 50 hours. If this is operational for 50 hours, so the energy consumed will be what? We have to know the energy consumed also. Then third is cost of energy consumed. Cost of energy consumed, if each unit cost ₹6, so means किसी भी कंज्यूमर को जो इसको यूज कर रहा है उसे कितना पैसा देना पड़ेगा. So first I will explain in English, then I will go for Hindi. Now, in this given is power, that is P equals to 1500 watt. Line voltage V is 250 volt. So power 1500 watt and voltage is 250 volts. Now formula is power equals to P equals to VI, V into I, मतलब current multiplied by voltage is the power. Now since we want to know the current, we can write Y equals to P by V, that is it comes out to be 1500 watt. Here I will write 1500, that is the power given to us, divided by voltage 250. So 250 is the voltage. So if we cut it, then we will get 6 ampere. 25 into 6 is 150. So this we will get a 6 ampere current. So the current drawn by this instrument, that is gauger, is when the power is 1500 watt, it is 6 ampere. अभी मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक इलेक्ट्रिक गीजर है जिसकी रेटिंग 1500 वाट दिया हुआ है और जो लाइन वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है. मतलब इसकी रेटिंग है 1500 वाट, 250 वोल्ट एंड लाइन वोल्टेज इज आल्सो 250 वोल्ट. सो 250 वोल्ट लाइन पे अगर हम 1500 वाट का गीजर लगाएंगे तो कितनी करंट फ्लो होगी, मतलब कितना करंट वो खींचेगा, कंज्यूम करेगा. तो अभी क्या होगा कि पावर, हम जानते हैं कि पावर जो होता है उसका फार्मूला है P इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट. करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे. तो मैंने वही किया, 1500 वाट डिवाइडेड बाय 250 वोल्ट, ये हमारा लाइन वोल्टेज है, इससे मैंने डिवाइड किया. सो आफ्टर डिवीजन मुझे मिलता है 6 एम्पियर करंट. तो हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का होगा कि करंट ड्रॉन बाय द गीजर इज 6 एम्पियर. Now I am going to solve the question number 2, that is B. Now here the same, that is energy consumed by it in 50 hours. Here power is given, power is the same, that is 1500 watt. 1500 watt power is given to us, but
the time for which it is run is 50 hour. 50 hours. So we know the energy consumed by it. So energy consumed by it, energy consumed E equals to energy consumed E equals to power into time, that is P into T. So power is 1500 watt into time is 50 hour. Time is 50 hour. So if we will multiply it, we will get 500 75,000 watt hour. This is watt hour. Now our unit is always kWh, so I will divide this with 1000. So this will be divided by 1000, that is 100. So we will get kWh. Once we divide by 1000, we will get 75 kWh. So the unit consumed by it will be 75 kWh, and this 1 unit equals to, we know that 1 unit equals to 1 unit equals to 1 kWh. Now I will solve the third part of the question, that is solution for 6 part, मतलब सी के लिए. तो अभी मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ. P इक्वल टू 1500 वाट, टाइम जो है 50 घंटे है. एनर्जी कंज्यूम्ड इज पावर इनटू टाइम. पावर हमको दिया हुआ है 1500 वाट और यह रन करता है 50 घंटे. तो हमको क्या मिलेगा? जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 75,000 वाट आवर. अब ये 75,000 वाट आवर को मुझे किलो वाट आवर में बदलना पड़ेगा. तो मैं 75,000 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 75 किलो वाट आवर. ना 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलो वाट आवर कही जाती है. तो सी पार्ट के लिए the cost of energy consumed if each unit cost ₹6. So cost of energy consumed. So we will see cost of energy consumed. Cost of energy consumed. So this is 75 total unit consumed and per unit rate is 6. मीन्स हमको एक यूनिट कंजम्पशन पे 6 रुपए देना पड़ेगा. मतलब वी हैव टू पे 6 रुपीज फॉर ए यूनिट कंजम्पशन. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 75 into 6. So 6 5 is 30 and 6 7 is 42 plus 3 450. Now the cost will be 450 rupees. So we have to pay 450 rupees at the cost of 6 rupees for the consumption that we have taken consumption as 75 kilowatt hour. So in this way the third part of the question is solved, that is cost of energy consumed is total energy, that is 75 kilowatt multiplied by 6 rupees. अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ.
जो कीमत है एनर्जी कंजम्पशन की, जितना भी एनर्जी हमने कंज्यूम किया, मतलब हमने उपयोग में लाया, वो है 75 किलोवाट। उस 75 किलोवाट को मैं 6 रुपए के हिसाब से गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 450 रुपए। मतलब मुझे 450 रुपए इस कंजम्पशन में गीजर के देना पड़ेगा। So with this, I have finished one example for the usage of electric appliances. In this case, it is geyser, and how to calculate the current drawn by it, energy consumption in a given time, and third is cost. How much cost you have to pay if you utilize this utility. So please subscribe to my channel and hit the like button, share it, and thank you.